एक का स्ट्रगल अलग होता है, उसके इमोशंस अलग होते हैं। हम जैसों को बार बार अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। तुम्हें लगता है तुम्हारी औकात है सुपरसोनिक से compete करने की? गगन, सुपरसोनिक्स के पास सब कुछ है, लेकिन मिसफिट्स के जैसा पागलपन नहीं है। Believe in that पागलपन। Hi Sumit. Hi. It's a pleasure to have you on Rediff. Thank you. How are you doing today? I'm doing well. I'm doing well. So this is about Hai Junoon. It's a show about dreams, passion, and just the fierce competition out there. Yeah. That's not very different from the actor's life, you know. Is that correct? Yeah, I mean, are you saying कि ये काफी actor के right से? Draw similarities between two, like the show and what happens in the actor's life. If I speak about my character, I think so. See, when you have someone, let's say you know, who's already from the industry, who's seen the industry, they can guide you well. But जब दूर दूर तक आपके फैमिली का या किसी का कुछ कनेक्शन ही नहीं है तो आपको पता नहीं होता कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, क्या शुरुआत सही होगी। जैसे कई सारी जगहों पे डिस्कशंस ऐसी होती हैं कि कौन से प्रोजेक्ट से तुम्हें करियर शुरू करना चाहिए। हमारे यहाँ पे ये होता है कि ऑडिशन कहाँ हो रही है, कहाँ पता लगाएं, वहाँ से हमारी शुरुआत होती है। तो which is good. I mean, I'm blessed to have lived the journey that I lived with all the mistakes and flaws. I think so. They all built me to become what I am today. I think so. The journey is responsible. But yeah, the rejections also. I mean, people talk about it like it's a tough thing, which it is. But I think it's a good thing, man. It's good to be rejected, so you realize that you're not enough for that character. At times, it's just that you do not fit the part, right? For example, if I have to play a certain character, I don't look like that character. It won't come to me. Many times it's just that, and many times it's like you're not enough as an actor for that. So that doesn't mean that you should cry over it, man. It's just that you try to make yourself better, and probably the chances of you getting certain roles would increase significantly if you work on your craft and make yourself better. If you make yourself better, I think so things would come to you. That's a little easy so I try to do that. And how similar are you to your character Sebi when it comes to following your dreams? I think so I'm pretty much the same when it comes to Sebi. I think so. I'm a little. Let's just say that I'm a little less serious than Sebi at times. वो जिस हिसाब से वो चलता है उसको भी समझ नहीं आता है, उसके अंदर भी डिलेमा है, उसको भी नहीं पता कई बार कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए. He is also figuring it out. And same goes for me, I'm also figuring it out. I don't know कि जो मैं कर रहा हूँ हमेशा वो सही होता है, नहीं होता है, कई बार नहीं पता होता. बट फिर भी आपको डिसीजन लेना पड़ता है उस टाइम पे. तो वो भी उस कैरेक्टर में कहीं ना कहीं था. वो एक होता है ना कि अपनी माँ से उसका जो कनेक्शन है कि मैं उनको एक बेटर लाइफ देना चाहता हूँ, which is something that I resonate with a lot because I've got one of the best parents in the world, I would say, and I'm blessed to have them, and I would love to give them a better life. Not that they have not created a good life for themselves, they are enough sufficient and they've lived a good life with good morals, and they've provided me enough whatever they could. I'm happy and content with that. But then you know कि माँ बाप को हम वो कराते हैं, मम्मी को हम ऐसी साड़ी दिलाते हैं, इतनी महंगी साड़ी दिलाते हैं, तो एक उनको भी ऐसा लगा है कि ये मैं चाहता हूँ वो भी एक्सपीरियंस करे ये सब चीज़ें कि वाह यार ये अलग फीलिंग है. तो वो सब चीज़ें हैं. मतलब वो तो कोशिश करता हूँ मैं भी कि अपने माँ बाप को वो सारी चीज़ें दे सकूँ. अभी तक आई एम नॉट इवन हाफ वे देयर व्हाट आई वांट टू गिव देम, बट देन that's something that I resonate with the character, and you know at times there are just moments where I connect with that scene a lot जहाँ पे सभी को वो मिल जाता है जो वो चाहता है कि मिसफिट्स को अप्रूव किया जाता है आफ्टर गोट्स परफॉर्मेंस. डीन कहती हैं कि you know you are getting that now, that support from the college, and that was his dream the entire time, to create some kind of legacy that makes their group Misfits
and dancing important and supported by the college in that let's say environment. तो वो जब हो जाता है ना कि जो वहाँ पे उसको फील हुआ है ना, वो मुझे फील हुआ है जब ऐसे काम करो और फाइनली एक दिन खुद को टीवी पे देखो और नहीं समझ में आ रहा क्या करें उस टाइम पे, या प्रीमियर पे आपकी फैमिली आ रही है, आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं जो आपको बचपन से जब इतने थे तब से देख रहे हैं, और वो आपकी मूवी में आ रहे हैं, थिएटर में बैठे हैं और स्क्रीन पे, बड़ी स्क्रीन पे आपको देख रहे हैं. These moments, I think so, were very, very cherishable. For sure. And you represent a group called Misfits in the show. Have you ever felt a misfit in your journey while trying to navigate your way through the industry? 100%. And I think so. Now the difference is that I am glad to be a misfit. I don't want to fit in anymore. I don't try to fit in anymore. I think so. I've figured my life till that extent at least. कि जहाँ मेरा वाइब नहीं बैठता है मैं नहीं रहता, ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं फील होती कि मिलना पड़ेगा, या मैं नहीं करता वो सब चीज़ें. आई डोंट नो इफ दैट इज़ द राइट थिंग टू डू, बट दैट जस्ट कम्स फ्रॉम विद इन. If it doesn't fit in, the vibe doesn't fit in, then I won't be there. I would definitely, if the situation arises, I will do what is must, but I think so. वो कोशिश नहीं करता मैं fit in होने की. I am what I am. If that works out for you, I'm happy to reciprocate everything. But if it doesn't work out for you, तो मैं कोशिश नहीं करूँगा उसके आगे ज़बरदस्ती. हाँ, I've always felt that. Like when I came here, I felt that I'm very different. I'm not saying that very different as in special. It's like I'm having trouble to connect with people and the surroundings and the way things are going around. And I felt that maybe that's because I'm not enough. That's what I felt initially. And then I realized, no man, it's not necessary that if everyone is doing the same thing, it doesn't mean that that's something which is a must to do. Maybe that's not for you. You shouldn't get into that. You need to be what you are. For that you need to embrace yourself first. That's a different journey that I worked on. वो internally उस पे भी बहुत काम किया. And walk me through your journey as an actor, because you are the first generation actor in your family. Yeah. What are your earliest memories of watching cinema, and how did you decide to become an actor? I think so. एक होता है ना, it all starts with a dream, a child's dream. When you watch TV, when you watch movies, and you just want to be there someday, it all starts there. And I did not know where to start from. जब ऐसे movies वगैरह देखी या कभी कि मेरे को एक छोटा सा रोल मिल जाए इसमें, ऐसे वाले स्पेस में वो शुरू हो गया था. बट करते करते फिर अलग ही जर्नी रही. मुझे पता नहीं था एक्टिंग कहाँ से शुरू करें, मुझे पता ही नहीं था. तो मैंने डांसिंग शुरू कर दी. मेरे पर्सपेक्टिव में उस टाइम पे 5th क्लास के बच्चे के पर्सपेक्टिव में ये था कि एक्टर को डांस भी आना चाहिए. तो मैंने बोला हाँ, डांस तो एटलीस्ट मैं सीख सकता हूँ. यूट्यूब से वीडियोस डाउनलोड करके फिर मैंने सीखने की कोशिश की. फिर डांस क्लासेस के लिए ट्राई किया, वो भी एक अलग जर्नी रही, वो भी किया. फिर धीरे धीरे डांसिंग के थ्रू आई वाज जस्ट वेटिंग कि कहीं मुझे एक्टिंग में अपॉर्चुनिटी मिले, और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज़ मिली. अब मुझे पता है कि कोई ऐसे उठा के मुझे बोलेगा नहीं कल कि तू कल बनेगा इस मूवी में हीरो. नहीं बना, ऐसा नहीं बना. मुझे पता था, मैं कभी उस भ्रम में रहना भी नहीं चाहता था. तो मुझे पता है कोई काम देखेगा, पसंद करेगा तो शायद कुछ और काम मिलेगा. बिकॉज इन माई पर्सपेक्टिव आई वॉज नॉट दैट हैंडसम. इन माई पर्सपेक्टिव आई वॉज नॉट दैट लेट्स से magnificent a personality. So then I told myself that if this is not what you have, then you must at least have something that you have control over, and that is my skill set. So work on that. So I tried to work on it. I tried to give my best whenever I could. And I can draw one similarity between you and Shah Rukh Khan's journey. Just like Shah Rukh, you also started with a negative character in like one of the earliest films. Do you know we share the same birthday? Really? Oh, interesting. It's a flex. Like at times, बचपन से लेके अब तक. तेरा बर्थडे कब आता है? 2 नवंबर. ओह, शाहरुख खान क्या साथ आता है. So, do you feel inspired by his journey? Like 100%. I mean, every actor, I'm telling you, especially when it comes to romance and a lot of things, हम क्योंकि ये देख देख के बड़े हुए हैं, तो हम में कहीं ना कहीं उनकी एक छाप है. हर एक्टर में कहीं ना कहीं वो छाप है, वो फील होती है कई बार मुझे. इवन इन मी एट टाइम्स, इवन इन माई पियर्स, जिनको देख देख के आप बड़े होते हैं, वो कहीं ना कहीं आप में वो चीज़ रहती है. आई डू फील इंस्पायर्ड लाइक अ लॉट, not just on screen but even off screen, the way
he is. I mean, the way he speaks, there's a lot to learn, is what I think at times. You know, I not just like him, but every person out there who's made it big. There is a reason why they were able to do that, and that is something that you should learn from. I think so. I try to learn from all these things. And anyone who has met Shah Rukh Khan have a Shah Rukh Khan story to tell. What's your Shah Rukh Khan story? That I am still writing that story. It has just started. Maybe someday I'll also have something to say about that, but right now I do not. I mean, I just remember I used to walk in front of his house, Mannat, रात को 1-1, 2-2, 3-3 बजे सिर्फ चलता था, घर को देखता था, नीचे BMWs और ये सब गाड़ियाँ लगी हुई वो देखता था वहाँ पे बैंड स्टैंड पे, एंड फिर हम वापस रिक्शा करके या दोस्त की कार में या ऐसे चले जाते थे वापस. बट हाँ, वो एक शुरू होता है ना जब आदमी मुंबई आता है, तो वहाँ ज़रूर घूमता है, वहाँ ज़रूर देखता है एक बार कि ऐसा कुछ. That's sweet. And your most well-known character is, of course, Lord Krishna that you played in Radhe Krishna. Is it difficult to shake off the image that already so strong in audience's mind? What's the challenge over there? I think so. I do not think about shaking images and all that thing. I just tell myself that, what are you, Sumain? I don't want to tell myself that I'm any more special than what I am. I am an actor, right? You give me a script, I perform. You tell me, the director tells me that this is the character, I like the story, I become a part of it. So that's my job by the end of the day. So अब लोग उसको कैसे perceive करते हैं वो लोगों की नज़र पे होता है. लोग मुझे पसंद करे एक कैरेक्टर में या कहीं भी पसंद ना करें, that is something which is like on them. I say my job is to work on the things that I can work on, which is my craft, and there's a lot to learn there. I mean, you will fail tremendously. जो जीत आप चाहते हो, जो जीत मैं चाहता हूँ मेरी एक्टिंग में, वो नहीं हासिल कर पाया हूँ अब तक. मुझे वो करना है, मुझे उसके लिए मेहनत करनी है और सीखना है. मुझे पता है मेरे फ्लॉज कहाँ हैं, तो उस पर काम करता हूँ, तो अगली बार कुछ नए निकल के आते हैं तो इस पर भी काम करना है. आई ट्राई टू डू ऑल दोज थिंग्स. I just try. I mean, that's in my hands. If like when people appreciate different characters, I like if as an actor I was able to do that. But I do not think about how people will perceive or will they be able to accept me, because that's not in your hands. You just give your performances and rest it on God and them. That's what I do. And you started off with Marathi films and then ventured into Hindi. Was it by choice? Was it like a conscious decision on your part? No, I actually started with Hindi. I started with television. I started with D3, Dil Dosti Dance, which was a huge show. Then I did Ashoka, which again I played a negative character. Then I got some work. जिसे काम मिलने के ऊपर था उस टाइम पे, तो कि काम मिल जाए बस, अच्छा कहीं कुछ कर लें, क्योंकि आपको रेंट भी भरना है बाय द एंड ऑफ द डे, तो कुछ काम मिल जाए बस सही से, है ना. ऐसा तो था नहीं कि काफ़ी पैसे हैं कि रेंट का देख लेंगे, नहीं देख सकते थे भाई, प्रॉब्लम था बहुत, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. तो कुछ काम मिलता रहे, बस अच्छा काम मिलता रहे जिससे आर्ट ग्रो कर सके, जिससे लोग आर्ट को देख सकें, पहचान सकें, फीडबैक देख सकें, पसंद कर सकें और प्रॉबेबली और काम दे सकें. दैट वाज द इंटेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. तो जहाँ मुझे जैसे काम मिला, रिगार्डलेस ऑफ द लैंग्वेजेस और रिगार्डलेस ऑफ what the project is about, if I like the story, if I like the character, now I can do it. But then it was like मिल गया काम, कर लो काम. But when you transition from TV or from Marathi industry, is there a disparity that you see when you start working in Hindi? Yeah, there is a certain disparity. What did you encounter? I mean, it's just in their tone, you know. I mean, it's like at times I've just felt that they would not be interested in the performance that I'm giving because I started from here or because I've done that. मैंने ये काम किया है इसके वजह से. मुझे रियलाइज़ हुआ बाद में, जब मैंने राधा कृष्ण किया उसके बाद मुझे था कि मुझे वेब सीरीज़ करनी है, क्योंकि इसमें मैं जिस तरीके से कैरेक्टर्स को अप्रोच करता हूँ या ट्रीट करता हूँ, प्रिपरेशन के लिए इतना टाइम मिलता है, आपको कैरेक्टर पे काम करने के लिए इतना टाइम मिलता है,
और वो ऐसे स्केल पे शूट होता है कि वो स्टोरी ज़्यादा लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंच सकती है, टू बी ऑनेस्ट, है ना। तो मुझे था कि ये मैं करना चाहता हूँ। और फिर मेरी कुछ लोगों से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि ओ यू हैव डन टीवी ना। मैंने बोला हाँ। तो उन्होंने कहा कि या सो what we'll do, we'll try pushing you at certain projects, and if it works out, we'll see. I'm not going to name them because it's not their fault. It exists, and that's why they do it. So I don't blame anyone. It's just how it is. At times I felt that probably if you've given me a fair chance at things, on the basis of my talent and my skills, I would be a little more happier. But then I don't mind these things happening. Someday you'll get an opportunity, and someday I'll prove what I can do, and probably that day you'll turn around and say ki okay, yeah. And that has happened. That has happened. That does happen. That has happened multiple times. जब लोगों को लगा कि ये नहीं कर सकते, मैंने उनको चेंज नहीं किया, उनका पर्सपेक्टिव, कोशिश नहीं की कि करो, मैं करूँगा, अगर वो जनरली अचीव कर पाया तो आप मान ही लोगे, ऑप्शन नहीं बचेगा आपको मानने के अलावा। सो एट टाइम्स आई फेल्ट दैट ऐसा भी लगा कि यार मुझे 10-12 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए करते करते। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑन स्क्रीन वर्क, उसके पहले कुछ बनने से पहले जो मेहनत थी वो अलग। 10-12 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए, और फिर अब मुझे रियलाइज़ होता है कि लोगों की बातों में वो हल्का सा एक छोटा सा टॉन्ट है कि ओके आपने टीवी किया, तो टीवी इज़ द बेस्ट थिंग दैट हैपेंड टू मी। मैं जितनी एक्टिंग सीखा हूँ वो टीवी में काम करके सीखा हूँ, जो लोगों के घर घर तक मैं पहुँचा हूँ वो टीवी की वजह से पहुँचा हूँ। सो आई डोंट लुक एट इट लाइक दैट, बट देर इज़ अ सर्टन थिंग दैट पीपल हैव मेड, and they might have their own reasons, but I just feel that at times just see the performance and probably give the opportunity. But again, there are a lot of things in the industry. It's not just about your acting, it's also about your sellability, and there's this brand imaging and a lot of things that of course is also an aspect that one needs to work on. Now, we all know that Mahabharat, the film, is in the making. As someone who has already played Lord Krishna, who do you like to see playing this iconic character on screen? No, I do not have any such expectations. I just want to believe in the project, and that's what I do. वो ज़्यादा expectations आप बस आपके अंदर रहती कि मैं इस तरीके से देखना चाहता हूँ. But then you should trust the director, I think so. So I trust the director, I trust the project, and I would love to see how it comes across. You know, I'm as an audience and as a devotee of Krishna, I just want to enjoy it. Let's see. And similar to Hai Junoon, what are some musical or dance shows that you enjoyed watching over the years? I haven't watched a lot, I'll be very honest, but I think so. Hai Junoon is something that one should watch right now. Yeah, Thank you so much. Thank you, brother. Lovely talking to you. See you.